this mic is still here. The IFA awards in one word. IFA awards in one word में कैसे बोलेगा कोई? Celebration? Celebrate. You are excited or nervous for दो पत्ती? For दो पत्ते? No, I mean nervousness तो खैर अब हो गई है, फिल्म आ गई है, लोगों को पसंद आई है, nervousness निकल गई है. I'm just excited and I'm just glad that it's nominated in so many categories, and that's it. Kriti, if you had the chance of working with one international artist, who would that be? Who's your favorite? Oh, that's very tough. I would obviously love to work with Meryl Streep. Love. But there are too many of them, yeah. Ryan Gosling. But you have recently re-released Ji. Special memory from that film. I think the whole film for me, the whole shooting experience was a beautiful memory because बहुत अलग किरदार था, बहुत अलग तरह की फिल्म थी उस टाइम पे मेरे लिए. It was just my fourth film and होता है ना, पहली बार डायलेक्ट ले रहे हो आप, पहली बार कोई ऐसा कैरेक्टर कर रहे हो जो एक छोटे शहर से है, जो आपसे इतना अलग है और जिसे लोग कहते हैं एकदम डी ग्लैम अवतार, एंड इट सॉर्ट ऑफ चेंज्ड. आई थिंक इट वाज अ माइलस्टोन इन माय करियर. इट चेंज्ड अ लॉट फॉर मी. आज ये डिजिटल अवार्ड का फर्स्ट एडिशन है जी. मैं आपसे जानना चाहूँगी आपके व्यूज़ क्या हैं, क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में कंटेंट रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए? What do you mean by content restrictions? जैसे सेंसरशिप होता है फिल्म्स के लिए, थिएटर्स के लिए, वैसे क्या OTT के लिए भी होना चाहिए? See, honestly speaking, censorship थिएटर्स के लिए होता है. जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं तो हम बाहर का भी काफ़ी कंटेंट देखते हैं जिसमें कोई सेंसरशिप नहीं है. तो अगर हम वो देख सकते हैं तो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं. सो इट शुड जस्ट बी बैलेंस्ड एंड सेम all over. Either as a platform you show certain things or you don't show, whether it's content from other countries abroad or content from India, there should not be any difference. That's it. After you won your national award, have you seen any changes in terms of your professional personal life? I mean, to be honest, I think it's just a great sense of validation which gives you a lot of confidence to take risks, to push the envelope. So आप as a human being, as an artist, confident feel करते हो कि आप कुछ अलग करो, और I think people also look at you with a different lens. So maybe that. Also, Kriti, what's new coming? What's new coming? Yeah. I'm shooting for तेरे इश्क में right now with Anand L. Rai and Dhanush, जिसकी शूटिंग चल रही है, जो मैं अभी छोड़ के आई हूँ दिल्ली में. मेरी वेट कर रहे हैं वो लोग वापस आने की. So that is going on. That is a beautiful film. It is something that I haven't done before. And Anand sir जो हैं, मुझे हमेशा से था कि मुझे उनके साथ काम करना है, which I'm very very excited about. Love story मेरा favorite genre है. And I think he just does them so well and so different and unique. And Dhanush के साथ पहली बार काम कर रही हूँ, which is again I think he's a fantastic actor. So it's great to sort of collaborate with someone like him. Not an actor, what would you have? I mean, I'm an engineer, so but I really feel like I would have gone into something related to the entertainment industry. Something, I don't know what. One actor from the South industry if you would like to work with? I would love to work with Allu Arjun. I think he is one phenomenal. One filmmaker, I mean, of course, Rajamouli Garu and Sukumar sir के साथ मेरी पहली पिक्चर मैंने की थी. My debut, actually, my first director ever, and I would love to now, work with him again, hopefully. धनुष के साथ थोड़ा सा अगर आप ऑन सेट कुछ camaraderie या कैसा? अभी बहुत टाइम है, आपको ये सब मिलेगा बाद में. Also, शिफ्रा 2.0 का बहुत इंतजार है सबको, कुछ बनेगी, वो आएगी. I think आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहिए because वो लोग लिख रहे हैं, but कुछ तगड़ा लिखना पड़ेगा उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए. So Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now.